बाहर आ रही है। इमेनेट करना, रेडिएट करना, डिस्प्ले करना मीन्स शो करना, वो चीज आप शो कर रहे हो बहुत ओपन। एंग्रिक छुपा लिया आपने, कंसील कर लिया, छुपा लिया। कंसीलर आता है जिससे चेहरे के दाग धब्बे छुपाए जाते हैं, बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं तो कंसीलर लगा लेते हैं। कंसील मीन्स छुपा लेना, सप्रेस कर लेना, विद होल्ड कर लेना मीन्स अपने पास रोक लेना। विद होल्ड और अप होल्ड दो शब्द होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। आपने किसी चीज को विद होल्ड किया, इसका मतलब आपने क्या किया, उस चीज को दबा दिया, उस चीज को आपने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। और सिमिलरली आप सॉरी एवरीवन, और शगुन की छींक। Transit. Lasting for only a short temporary. Lasting for only a short time or temporary. Temporary, fleeting, shortly.
during lasting. The economic downturn was considered a transient phase. The economic the economic downturn was considered a transient phase by policymakers. Exuded adjective. Sonic. To display an emotion of quality, to display an emotion or quality strongly and openly. Emanated, radiated. Displayed. Concealed, suppressed, withheld. She exuded confidence as she stepped into the stage. Onto the stage. Enduring, continuous. आपने किसी चीज को अपहोल्ड किया, Withhold. मैम इसी का इंतजार कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? आप उस चीज को मेंटेन करें, आप उस चीज को सपोर्ट करें। तो दोनों ही वर्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं मीनिंग में, विदहोल्ड और अपहोल्ड। दोनों ही क्या होती है? दोनों ही वर्ब्स होती है, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या एक्सूड किया? एक्सूड का सिनोनिम भी होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब भी क्या होता है? शो करना। तो उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? उसने दिखाया कॉन्फिडेंस एज शी स्टेप्ड ऑन द स्टेज। वो स्टेज पे चढ़ी और उसने क्या दिखाया? कॉन्फिडेंस दिखाया।
अगला वर्ड है एफ्लिक्ट। दो शब्द होते हैं, एक होता है एफ्लिक्ट और एक होता है इन्फ्लिक्ट। दोनों के दोनों ही आपके वर्ब्स होते हैं और दोनों ही दोनों नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते हैं। मतलब अगर कोई किसी चीज पे इन्फ्लिक्ट कर रहा है या एफ्लिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको दर्द दे रहा है। afflicted, पीड़ित करना, causing pain or suffering to someone or something. Troubling, tormenting, distressing, comforting, soothing, relieving. The drought is severely afflicting afflicting farmers in the region. दोनों का मतलब दर्द देने से रिलेटेड होता है और दोनों ही वर्ब होते हैं। तो कॉजिंग पेन और सफरिंग टू समवन और समथिंग, किसी को दर्द देना, ट्रबल करना, टॉर्मेंट करना, डिस्ट्रेस करना, परेशान करना, किसी को दर्द देना, एफ्लिक्ट करना, इन्फ्लिक्ट करना मींस दर्द देना। एंटोनिम सुकून दे रहे हो, सुकून देने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप सभी को पता है, कल भी किए थे हमने। कंफर्ट कर रहे हो, सूद कर रहे हो, रिलीफ कर रहे हो। ए वाले वर्ड्स फटाफट से बता दो। एले कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, एमेलियोरेट कर रहे हो। पी वाले बता दो। पैसिफाई कर रहे हो, प्लैकेट कर रहे हो, पैलिएट कर रहे हो। अब एम वाले बता दो। मॉलिफाई कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है दर्द को कम कर रहे हो, लल कर रहे हो, दर्दों को कम कर रहे हो। तो जो ड्रॉट पड़ा, जो सूखा पड़ा, वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है फार्मर्स को उस एरिया में। तो जो सूखा पड़ा वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर ड्रॉट का मीनिंग होता है सूखा पड़ना। बाढ़ आने के वर्ड बहुत बार एग्जाम में आते हैं। बाढ़ आने के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एक तो इजी वर्ड होता है, सबको पता होगा, फ्लड आना। एक होता है इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब क्या होता है? फ्लड, बाढ़। एक होता है डेल्यूज, इसका मतलब भी क्या होता है? बाढ़। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग होता है बाढ़। बैक टू बैक बहुत सारी चीजें आ जाना इस बाढ़। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रॉटल। थ्रॉटल मीन्स किसी को रोकना। आप किसी को थ्रॉटल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। अब थ्रॉटल के तो हमने बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़े। कोशिश करते हैं कि आज कम से कम 10 सिनोनिम्स को लिख पाए थ्रॉटल के। चलो स्टार्ट करो। throttling, गला चौकना,
restricting or suppressing something. Strangling, choking, stiffening, liberate, liberating, releasing, encouraging. Over regulation is थ्रॉटल कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, गला घोट रहे हो मतलब रोक रहे हो आगे बढ़ने से, स्टिमी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, रोक रहे हो मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, कर्व कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, स्ट्रैंगल कर रहे हो, चोक कर रहे हो, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को रोक रहे हो कि वो किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ पाए। स्ट्रैंगल लिख लिया हमने, स्ट्रैंगल जैसे एक और वर्ड होता है स्ट्रैंगुलेट करना, स्ट्रैंगुलेट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, सामने वाले इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। एक फ्रेजल वर्ब भी होती है रेन इन करना, रेन इन करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, उसको आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो। यस, एंटोनिम्स, फ्रीडम दे रहे हो भाई, फ्रीडम दे रहे हो मतलब लिबरेट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एनकरेज कर दिया गया है। perennial, सदा, lasting or existing for a long or
apparently infinite time. Everlasting, enduring, constant. Enduring, constant. A temporary minor deviation, temporary shortened, fleeting. Water scarcity has been a perennial problem in the region. Blip. A temporary or minor deviation from the usual trend or pattern. Anomaly. Fluctuation. Continuity, consistency, permanence. एब्जॉल्व कर दिया है आपने, वेरी गुड। एक्यूज कर दिया है, एक्सोनरेट कर दिया है, एक्सकल्पेट कर दिया है, उस इंसान को फ्री कर दिया है, अनलीश कर दिया है, अनब्रिडल कर दिया है, उसको लीवे दे दिया। लीवे इज फ्रीडम देना, गिव लीवे, उसको फ्रीडम दे दिया है, उसको माफ कर दिया है, मींस एमनेस्टी दे दी है, उसको पार्डन कर दिया है,
इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया, उसको फ्रीडम दे दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारे के सारे वर्ब्स हैं क्योंकि एक्शन की बात हो रही है। ऐसे ही याद होंगे, बार बार। हाँ, विंडिकेट कर दिया, विंडिकेट वर्ड नहीं लिखा मैं, विंडिकेट कर दिया है मतलब उस इंसान को फ्री। तो वोकैबुलरी कैसे याद होगी? बार बार रिपीट करके याद होगी, रेपिटेशन से याद होगी, ऐसे ही याद होगी। हाँ, तो ओवर रेगुलेशन, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर रहे हैं? गला घोट रहे हैं, रोक रहे हैं। किसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं? छोटे छोटे बिजनेस की ग्रोथ को रोक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप जिन सब वो करते हैं जो इनफाइनाइट टाइम तक चले, बिना रुके चलती रहे, उनको क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स। एवरलास्टिंग है, चलती रहेंगी। एंड्योरिंग का मीनिंग अभी अभी हमने पढ़ा था, एंड्योरिंग को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट, तेजी से चलती रहेंगी। एंटोनिम्स क्या हो गए? टेम्पररी है, क्षण भर की है, शॉर्ट लिव्ड है, फ्लीटिंग है। मींस पानी नहीं रहती है, पानी की है, पर देखो एक्चुअल सही नहीं है, मतलब जो सही होनी चाहिए थी बट हुई ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? बिलिप। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एनोमली का मतलब भी क्या होता है? डेविएशन, मतलब वो चीज ऐसी होनी चाहिए थी और अलग हो गई, दैट मींस उसमें क्या है? एनोमली हो गया, फ्लक्चुएशन है। क्या होता है? आपने किसी चीज को सहायता, assistance and support in times of hardship or distress. Distress. Aid, relief, help, hindrance, obstruction, neglect. The organization provided support to flood victims. Replenishment. The process of following something up. Refilling. Restocking, renewal. Depletion, exhaustion, reduction.
The replenishment of groundwater is crucial for sustaining agricultural activities. Agriculture. हवा में फ्लिप कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने उस चीज को क्या किया, ऐसे उछाला और तो उल्टा होके आ गया, मतलब वो टर्न होके आ गया, मतलब फ्लिप कर दिया, उसको उछाल के पलट दिया। उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप करना मीन्स किसी चीज को टर्न ओवर कर देना बहुत तेज है, या किसी चीज को हवा में उछाल के टर्न ओवर कर देना। कैसे टर्न ओवर कर देना, बाय थ्रोइंग इन द एयर, दैट इज व्हाट फिलिप। तो फिलिप और फिलिप दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अगला वर्ड है सकर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो। सकर का मीनिंग क्या होता है, आपको जो हेल्प मिल रही है, आपको जो सहारा मिल रहा है, जो सहारा होता है उसको बोलते हैं सकर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। तो असिस्टेंस मींस हेल्प, हेल्प और सपोर्ट जो मिलता है प्रॉब्लम के समय, दैट इज व्हाट सकर। एड मींस हेल्प, रिलीफ मींस सुकून, हेल्प मिली। एंटोनिम्स रुकावट आ गई, हिंड्रेंस आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, निग्लेक्ट कर दिया गया। इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब भी क्या होता है, रुकावट एक तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सकर दिया। सकर मींस हेल्प दी, किसको, फ्लड विक्टिम को। तो जो बाढ़ जिन्होंने झेली उनको मदद की, किसने मदद की, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मदद की। रिप्लेनिशमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, नाउन हो गया। री लिखा हुआ है, री शब्द का मीनिंग क्या होता है, अगेन, वापस से, फिर से। तो रिप्लेनिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को वापस से भर रहे हो। आपने उस चीज को वापस से भर दिया, मतलब क्या कर दिया, उस चीज को रिप्लेनिश कर दिया। तो द प्रोसेस ऑफ फिलिंग समथिंग अप अगेन, वो प्रोसेस किसी चीज को दोबारा भरने का। रीफिल करना, रीस्टॉक करना, रिन्यूअल करना मींस उसको वापस से भर देना। एंटोनिम्स खत्म कर देना, डिप्लीट कर देना, एग्जॉशन खत्म हो गया, रिडक्शन खत्म हो गया। तो ग्राउंड वाटर को दोबारा से भरना बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब क्या कर दिया उस चीज को, is crucial, indispensable, essential, vital, रिवाइटलाइज कर दिया है। इसका भी वर्ब फॉर्म ही लिख देते हैं, मतलब क्या कर दिया है उस चीज को, रिसस्किटेट कर दिया है। मतलब क्या कर दिया है उस चीज को, उस चीज में वापस से जान डाल दी है। मतलब आपने उसको एक तरीके से रेजुविनेट कर दिया है। रेजुविनेट का मीनिंग समझते हो, इसमें एक रूट वर्ड है JUV। JUV रूट वर्ड का मीनिंग होता है यंग। तो उसमें वापस से यंगनेस ले आए, वापस से उसके अंदर क्या कर दिया, जान डाल दिया। एक और वर्ड होता है रेसरेक्शन। रेसरेक्शन का मतलब भी क्या होता है, रेसरेक्ट कर दिया, मतलब वापस से उस चीज में जान डाल दिया। इन सब में रूट वर्ड है वी, और वी का मतलब क्या होता है, रिसस्किटेट, रिवाइटलाइज, रेजुविनेट, रिसरेक्ट, सबका मीनिंग है वापस से जान डाल। यस, कुछ बच्चे मुझे क्रूशियल के और कुछ सिनोनिम्स बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पाइवोटल है, पाइवोटल का मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव है, दिस इज इम्पेरेटिव फॉर यू, मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। हाँ, रिकिंडल का तो मीनिंग होता है जगा देना वापस, किसी के अंदर जो फीलिंग्स जगा देना, दैट इज रिकिंडल कर देना। अच्छा, अब यहाँ से एक दो कुछ वर्ड्स और करते हैं। रेजुविनेट, कुछ
unstable, not steady or firm. Shaky, unsteady, fluctuating. Stable, firm, steady. The oblique क्रीम्स आती है enhancer. जो आपकी स्किन को क्या कर देती है, रेजुविनेट कर देती है, वापस से यंग दिखाने शुरू कर देती है। तो वो जो क्रीम्स आते हैं वो क्या वादा करते हैं कि आपकी स्किन को आपकी स्किन को कैसा कर Bolstered, देंगे, strong, इमैक्युलेट stronger. बना देंगे। इमैक्युलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉल्टलेस। क्या मीनिंग होता है, मजबूत. फ्लॉलेस। क्या कर देंगी, एकदम प्रिस्टीन बना देंगी, एकदम साफ, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वर्ड और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे। वेरी गुड, इम्पेकेबल बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, एरर फ्री, स्पॉटलेस, राइट, इसमें कोई दाग धब्बा कुछ नहीं। Strengthened. Reinforced. Boost. Support. Weakened. Undermined. Immaculate flow. Faultless. Flawless. Pristine. Impeccable. Moist. Spotless. The team's confidence was bolstered by not. तो वॉबली शब्द का मीनिंग क्या हो गया, वॉबली इज अनस्टेबल है, अनस्टेडी है, एक जगह नहीं टिक पा रहा है। एंटोनिम स्टेबल है, फर्म है, स्टेडी है, एक जगह टिका हुआ है। तो जो वॉबली, वॉबली मींस जो शेकिंग, जो फाइनेंशियल मार्केट थी जो हिल रही थी, एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स क्या थे, इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए।
आप किसी चीज को बोलस्टर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोलस्टर, बहुत बार स्ट्रॉन्ग में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है। तो आपने किसी चीज को बोलस्टर किया हुआ है, इसका मतलब आपने उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, स्ट्रेंथन किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, रीइंफोर्स किया है, बूस्ट किया है, सपोर्ट किया है, आपने उसको सॉलिडिफाई किया है, सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई किया है, आपने उसको फोर्टिफाई किया है। इन सब शब्दों का मीनिंग है आपने उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। फोर्ट एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ। अच्छा, जो चीज स्ट्रॉन्ग बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आया है, स्ट्रॉन्ग चीज को बोलते हैं रोबस्ट। वो चीज स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वो कैसी है, रोबस्ट है, मतलब वो कैसी है, स्टर्डी है, रेजिलिएंट है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपने उसको कमजोर कर दिया है, अंडरमाइन कर दिया है, और डरपोक हो। Present tense. Wind part. Not be brave enough to do something. Turn over to give something or someone that you can control to someone else. To give something that you control to point out. To make a person notice someone or something. Bundle of. To send someone or something. To a place quickly or suddenly. डरपोक का वर्ड क्या होता है, आप फॉरवर्ड हो, बिल्कुल. आप टिमिड हो, इसका मतलब आप उतने ब्रेव नहीं हो कि आप वो काम कर सको, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, विम्प आउट कर रहे हो, डरपोक। अच्छा, कॉवर्ड एक नाउन होता है, यहाँ से ग्रामर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, और टिमिड एक एडजेक्टिव होता है, इसको याद रखो। अगला टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब क्या है, कोई चीज आपके कंट्रोल में है,
आपने that you to give control to something or someone else. someone that you control, कोई चीज आपके कंट्रोल में, आपने वो किसी और को कर दे दी, वो क्या होता है टर्न ओवर। कोई चीज आपके पूरे हाथ में थी, आपने किसी और को चाबियां थमा दी उसकी, दैट मीन्स क्या किया, टर्न ओवर। अच्छा एक इडियम भी होता है टर्न ओवर से, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये बहुत हो गया, लेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब एक नया पन्ना खोलते हैं इस किताब का, इसका मतलब दोबारा से शुरू करते हैं और कुछ बदलाव लेके आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स टू स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अब कुछ डिफरेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ अलग करेंगे, एक नया पन्ना खोलते हैं। पॉइंट आउट तो सभी को पता ही होगा, जब पार्टी में ना कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, मतलब आप किसी को नोटिस मत करवाओ किसी चीज, मीन्स पॉइंट आउट, टू मेक अ पर्सन नोटिस समवन और समथिंग, दैट इज बंडल ऑफ। सारे के सारे तो पार्टी, Jump the gun. To do something too soon. Before the proper time. Go against the grain. Different from what is normal or usual. Go bananas. To become extremely angry or excited. होते थे कि आप उस अनाज के अगेंस्ट चल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल है आप उससे कुछ अलग हटके कर रहे हैं, तो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और नेक्स्ट इज वो बनाना, तो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, मतलब क्रेजी हो गए हो तरीके से, यू वेंट बनाना, वाइल्ड हो गए हो, राइट, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा ग्रेन का एक और इडियम होता है, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मींस आप किसी चीज को डाउट से ले रहे हो, आप उस चीज को लेके कंफर्म नहीं हो, आपको क्या ले रहे हो, आप उस चीज को सस्पिशन के साथ ले रहे हो। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को लेके डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो उस चीज को लेके, स्केप्टिकल हो, स्केप्टिकल का मतलब भी क्या होता है, आपको डाउट हो रहा है उस चीज में। टू पिक का मतलब क्या, I want to pick. To have a grievance. Or complaint that needs to be discussed with someone. Brush up on something.
to improve your skills in something. A bone to pick, to have a grievance or complaint that needs to be discussed with someone. टॉपिक ऐसा है जिसपे हमारी लड़ाई चल रही है, हमें उस लड़ाई को ठीक करना है। ये देखा था टॉपिक है जिसपे हमारी लड़ाई चल रही है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, या एक और इसके जैसा इडियम होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों का मतलब होता है झगड़े की जड़ या रीजन ऑफ फाइट। तो यही बोन से, इसी बोन से एक और इडियम बनाया गया, अब बोन टू पिक, मतलब एक झगड़े की जड़ है जो मुझे पिक करनी है, तुमसे डिस्कस करनी है। मींस एक प्रॉब्लम, एक कंप्लेंट, एक झगड़ा है हमारे बीच में, एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको अभी हमें डिस्कस करना है। ब्रश अप ऑन समथिंग, किसी चीज में और अच्छा हो जाना, टू इंप्रूव योर स्किल्स इन समथिंग, किसी चीज में और अच्छा हो जाना मींस आपने उस चीज में ब्रश अप ऑन कर दिया। ही ब्रश्ड अप ऑन द कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स में और अच्छा हो गया। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? मजा आया वोकैबुलरी में? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4200 स्टूडेंट्स आर वाचिंग विद 4200 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। लूजिंग मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? स्पीड। इंग्लिश में मोमेंटम स्पीड होता है, फिजिक्स की भाषा देखो तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है वो स्पीड जिसके अंदर एक डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं? डायरेक्शन को दिखाते हैं ऐसे। बट इंग्लिश में मोमेंटम का मतलब स्पीड ही होता है कि हमारी स्पीड कम होती जा रही है। ऑन स्लोइंग कंजम्पशन डिमांड, तो मतलब जो हम सामान कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। Several economic indicators released over the past week are bad news for the Finance Minister and Reserve Bank of India's hopes of a growth rebound in the second half of 2024. At least for the October-December quarter, while GDP growth slipping to 5.4% in the second quarter was termed a transient blip, policymakers have acknowledged slowing consumption, demand level restrained
While GDP growth slipping to 5.4 in the second quarter was down a transient transient means lasting for only a short time. Blip. A temporary minor deviation from the usual trend pattern. Temporary minor deviation. Transient. Small. Transient blip. Policymakers have acknowledged slowing consumption demand led by restrained spending trends in urban areas. They have also exceeded to display emotion, quality, strong opinion. So exudes of optimism about a festive boost from cities along with a resilient rural demand outlook lifting the momentum. The latest data points are also important as they are part of the final process for the Finance Ministry to access before the finalizes its economic blueprint for the 25 to 26 in the February 1 Union Budget. Bank credit growth has slowed for the fifth straight month in November, while core infrastructure sectors about 40% of industrial output expanded at a 4-month high place of 40. पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं. Several economy से related indicators में जो numbers होते हैं जो रिलीज किए गए, तो बहुत सारे इकोनॉमी पे का डेटा रिलीज किया गया पिछले हफ्ते. वो खराब न्यूज है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उम्मीदों के लिए. कि इनकी उम्मीदें क्या थी? इनकी उम्मीदें थी कि एक ग्रोथ में उछाल आएगा. रिबाउंड का मीनिंग क्या होता है? उछाल. व्हाट यू नीड? इंक्रीज. तो एक ग्रोथ में इंक्रीज आएगा सेकंड हाफ ऑफ 2024-25. सेकंड हाफ का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट हाफ होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अप्रैल से सितंबर हो गया फर्स्ट हाफ, अक्टूबर से मार्च हो गया सेकंड हाफ. तो इनको उम्मीदें थी कि अक्टूबर से मार्च वाले समय में एक उछाल आएगा. तो उस उछाल की उम्मीदें थी, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स रिलीज हुए, बहुत सारा डेटा रिलीज हुआ. तो उसने क्या किया है? खराब न्यूज पेश की है एटलीस्ट फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर. तो इन लोगों को क्या लगता था कि अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, जो 3 महीने का समय है, इसमें तो उछाल आएगा. जीडीपी ग्रोथ जो है स्लिप कर गई. स्लिप मींस डिक्रीज हो गई, कम हो गई. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो हमारी कंट्री में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उस सबका टोटल कर दे, उसको बोलते हैं जीडीपी. तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कम हो गई, 5.2% रह गई सेकेंड क्वार्टर में. उसको क्या बोला गया था? सेकेंड क्वार्टर क्या हो गया? पूरा साल 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है. पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल से लेकर जून तक, दूसरा हो गया जुलाई से लेकर सितंबर तक, तीसरा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और चौथा हो गया जनवरी से लेकर मार्च तक.
क्वार्टर था जुलाई से लेकर सितंबर, उसमें जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हो गई थी और क्या बोला गया था कि वो एक ट्रांजिएंट मींस टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, थोड़े से समय का ट्रांजिएंट ब्लिप है। ब्लिप का मीनिंग क्या हो गया, डेविएशन है कि भाई नॉर्मल तो ग्रोथ ही होती है, हल्का सा एक बार डेविएशन हुआ है, हल्का सा चेंज हुआ है तो टेम्पररी है। पॉलिसी मेकर्स हैव एक्नॉलेज, पॉलिसी मेकर्स में जो लोग पॉलिसी बनाते हैं इस बात को एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज मींस माना है इस बात को, किस बात को माना है कि जो स्लोइंग कंजम्पशन डिमांड है, जो सामान कम खरीद रही है, वो किसकी वजह से हम सामान कम खरीद रहे हैं, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मींस कंट्रोल्ड स्पेंडिंग ट्रेंड, कि कंट्रोल्ड वे में हम खर्चा कर रहे हैं, ट्रेंड मींस पैटर्न जो चल रहे हैं अर्बन इंडिया में शहर। तो ऑथर ने क्या बोला, पॉलिसी मेकर्स ये मानते हैं कि हमारी ग्रोथ इसलिए कम हो रही है क्योंकि शहर के लोग जो है अब सामान खरीद ही नहीं रहे या बहुत कम खरीद रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में खरीद रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में खर्चा कर रहे हैं। दे हैव आल्सो एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मींस दिखाना, शो करना, तो उन्होंने क्या किया है, बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखाया है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी। तो जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई है। किस चीज को लेके पॉजिटिविटी दिखाई है, अबाउट द फेस्टिव बूस्ट, की फेस्टिवल आएगा, दिवाली आएगी, फेस्टिवल कब आता है, अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, तो इसमें क्या होगा, बूस्ट होगा, बूस्ट मींस इंक्रीज होगा फ्रॉम सिटीज, शहरों में खर्चा ज्यादा होगा, अलोंग विद, साथ के साथ रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मींस स्ट्रांग, साथ के साथ गांव में भी डिमांड अच्छी रहेगी, लोग गांव के लोग भी खर्चा करेंगे। ये जो नजरिया है ये क्या करेगा, लिफ्टिंग दी मोमेंटम, ये जो है स्पीड को बढ़ा देगा हमारी ग्रोथ। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा आया वो किस चीज की तरफ पॉइंट करता है, द लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स, नहीं पॉइंट करता नहीं है, पॉइंट्स तो नाउन की तरह यूज है, तो जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट, जो लेटेस्ट डेटा के पॉइंट्स आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है, फाइनल गॉजिस, गॉजिस मींस एक गॉज करने का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए लेटेस्ट डेटा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल जांच बताएंगे जिससे वो इवैल्यूएट कर पाएंगे, असेस का मीनिंग भी क्या होता है, इवैल्यूएट कर पाएंगे बिफोर इट फाइनलाइजेस, किससे पहले वो फाइनलाइज, किससे पहले जांच कर पाएंगे कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनलाइज कर दे कि उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी को लेकर ब्लूप्रिंट क्या होगा, ब्लूप्रिंट मींस प्लान क्या होगा 2025-26 वाले साल के लिए, और फरवरी 1 में वो यूनियन बजट बनाएंगे तो उसमें वो ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो पहले डेटा आ गया है तो डेटा की जांच भी जरूरी है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ, बैंक्स जो लोन्स देते हैं, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, लोन्स की ग्रोथ, वो भी कम हो गई है फॉर द फिफ्थ स्ट्रेट मंथ इन नवंबर, नवंबर में 5 लगातार महीने कम हो रही है। जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कोर मींस मेन, जो 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट देते हैं, मतलब 40% का आउटपुट वहीं से आता है, वो जो है बड़े हैं, हालांकि उनकी 4 महीने की हाई पेस है 4.3। तो ऑथर ने पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई प्रॉब्लम कर रही है, ग्रोथ कम हो रही है, ना शहर के लोग खर्चा कर रहे हैं ना गांव के लोग खर्चा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था चीजें अच्छी होंगी लेकिन चीजें अच्छी नहीं हुई है, लोन्स में ग्रोथ कम हो गई है, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या होते हैं, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, ये सब बनने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पैसेज समझ आया सभी को, रीबाउंड का पार्ट ऑफ व्यू। Several economic indicators released over the past बता दो, was termed वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वर्ब क्या, while GDP growth slipping to in the second quarter, GDP growth was hopes of the Reserve Bank of India's hopes of a growth rebound. एक्टिव वॉइस है। स्लोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, Slowing consumption. Slowing बूस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, boost. Festive boost. Check. About a festive boost. चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक पास करें। ये देखो नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस आर का सब्जेक्ट क्या था, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स Yes. We three additional information also starts with
additional information starts with V1 plus ing V3 preposition गूगल था इसलिए हमने आर लगाया। होप्स एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन आता है, एडजेक्टिव नाउन भी आ सकता है, बट ये हमेशा नाउन को नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी एस हक दिखाता है और हक किसी चीज पर नहीं होगा तो चीज हमेशा नाउन होती है, तो होप्स जो है नाउन है। रिबाउंड और एक आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, रिबाउंड भी नाउन है। वॉस टर्म सबसे पहले तो ये पैसिव वॉइस है, वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। आज किसको टर्म किया गया कि ये क्षण भर का ही डेविएशन है, जो स्लिपिंग हुई जीडीपी ग्रोथ की, जो स्लिपिंग हुई है, तो उसका पूरा सब्जेक्ट है जीडीपी ग्रोथ स्लिपिंग। स्लोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजम्पशन डिमांड नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। V1 प्लस ing है स्लोइंग, जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। बूस्ट और एक आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, बूस्ट आपका नाउन। indicators are finance minister noun yes noun hopes noun growth rebound noun GDP growth first term past participle present participle चलो यहाँ first plus with simple past पार्सिंग करते हैं, बैंक क्रेडिट एडजेक्टिव पर रोल प्ले कर रहा है, बीइंग नाउन हो गया, हैज वर्ब हो गया, स्लोड वर्ब हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, फिफ्थ एडजेक्टिव हो गया, स्ट्रेट वे एडजेक्टिव पर रोल प्ले कर रहा है, मंथ नाउन, इन प्रीपोजिशन boost noun first to boost नवंबर नाउन, वाइल कंजंक्शन, कोर एडजेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर एडजेक्टिव, plus adjective plus noun सेक्टर्स नाउन। अबाउट यहाँ पे एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नहीं है। 40% नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव, आउटपुट नाउन, एक्सपेंडेड वर्ब, ऐड प्रीपोजिशन और आर्टिकल, 4 मंथ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, हाई भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, फेस नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, 40% नाउन का रोल प्ले कर रहा है। कितने लोगों के सारे आंसर ठीक निकले? However, production levels were 3.3% below October, with 6 of 8 sectors operating at lower capacities. The Purchasing Managers Index shows factory activity levels through November and December were the worst through 2024, even as input cost inflation spurred. Price hikes that hit demands somewhat over time. The goods and services tax receipts for December, based on transactions concluded in November, do not have much assistance and support terms much assistance to offer either, especially on the consumption of engine of the economy. Gross revenue were at a 3-month low of almost 1.77 lakh crore and just 7.3% higher than last year, marking the joint second slowest uptick in 3.5 years. December's revenues, in fact, marked the fourth straight month of below 10% growth, with the place decelerating every passing month and year-to-date rise in revenue now 8.6%, making
the 11% growth estimate in the budget to told us to catch up with the final quarter. But 3.3% बिलो अक्टूबर, वो अक्टूबर से 3.3% कम थे। फिर 6 ऑफ 8 सेक्टर्स, 8 में से जो 6 सेक्टर्स थे वो काम कर रहे थे अपनी कैपेसिटी से कम थे। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एक नाम होता है, इंडेक्स का नाम है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वो क्या दिखाता है? वो फैक्ट्री की एक्टिविटी लेवल्स दिखाता है कि फैक्ट्रीज में कितना काम हुआ है। तो इसने नवंबर और दिसंबर में दिखाया, और उसने क्या बोला? इसने बोला कि नवंबर और दिसंबर में सबसे खराब था, पूरे 2024 का सबसे खराब काम हुआ था, सबसे कम का हाँ जी, क्या लिखा हुआ है कि नवंबर और दिसंबर के महीने सबसे खराब है पूरे 2024 में। इवन एज, हालांकि क्या हुआ? इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो रॉ मटेरियल वो लोग यूज कर रहे होते हैं उसमें जो महंगाई होती है उसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। इसकी वजह से क्या हुआ? वो लोग जो सामान ले रहे थे अपने प्रोडक्शन में वो महंगा हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? स्पर हो गया। स्पर मींस इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? प्राइस हाइक्स, मतलब प्राइस और ज्यादा महंगा हो गया, जिसकी जो किसको डिमांड को हिट करेगा समवॉट ओवर टाइम। समय के साथ कुछ ना कुछ डिमांड हिट होगी। कोई चीज महंगी हो जाती है तो क्या हो जाता है? लोग उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऑथर ने बोला कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा तो फाइनल प्रोडक्ट का भी कंजम्पशन इंजेक्ट टोटल इसमें तो एक टॉल टास्क बनाते हैं। टॉल टास्क का मतलब क्या है? 11% की हम चाह रहे थे ग्रोथ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि 11% की ग्रोथ होगी। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन चुका है और इसको कैचअप करना बड़ा मुश्किल है, इस लेवल पे आना बड़ा मुश्किल है फाइनल क्वार्टर। तो हम क्या सोच रहे थे कि पूरे साल की ग्रोथ होगी 11%, लेकिन चीजें इतनी खराब चल रही हैं, अब कुछ ही महीने बचे हैं, तो कुछ ही महीनों में इतनी ग्रोथ लाना कि हमारा टारगेट मीट हो जाए, वो एकदम क्या है? वो एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर की टोन बड़ी नेगेटिव है। ऑथर ने एक अच्छी चीज बोली थी, उसमें भी ऑथर ने क्या बोला? चीजें खराब हो गई। तो ऑथर ने क्या बोला? चीजें खराब हो रही है, जीएसटी कम हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, इतनी तेजी से जीएसटी नहीं। मतलब उस चीज जो Net revenues after refunds were just 3.3%, the slowest this fiscal, although this may partly be explained by high refund payouts in December. Revenue growth from domestic transactions slowed to 8.4%, while import revenues grew just 3.9%. The former may perhaps be linked to tighter retail credit flows and a post-Deepavali spending pullback, but the latter is a tad puzzling as November's goods import bill had shot up 27% to a record high of $70 billion. The former may perhaps be linked to tighter retail credit flows and a post-Deepavali spending pullback, but the latter is a tad puzzling, as November's goods import bill had shot up 77% to a record high of $70 billion. The poor revenue growth rates for major consumer states such as Uttar Pradesh 1% and Gujarat 4%, and the persistent contraction in Andhra Pradesh and a few northern states including Manipur also need closer scrutiny. For the budget's formulation, the Centre would do well to try to understand and address the pain points affecting consumption, including high inflation. कंज्यूमर ने जहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई, गुजरात में सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई, एंड द परसिस्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस। और जब लगातार गिरावट हो रही थी आंध्र प्रदेश में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो मणिपुर भी आता है, तो इस सब चीज की जांच करनी चाहिए, स्क्रूटनी में जांच होनी चाहिए। बजट को बनाने के लिए अब सेंटर को क्या करना पड़ेगा? सेंटर अच्छा करेगा अगर सेंटर समझे और ठीक करे उन पेन पॉइंट्स का, जो प्रॉब्लम्स है उनको समझे, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले। जो एफ्लिक्ट कर रही है, एफ्लिक्ट मींस दर्द दे रही है, पीड़ा दे रही है, परेशान कर रही है कंजम्पशन को, हमारी डिमांड को, हम जो खर्चा कर रहे हैं उसको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो हम सारे लोग परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल खोल के खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज हाई इन्फ्लेशन। हद से ज्यादा।
तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में भी सेम बातें करी, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो गई, बड़ी बड़ी स्टेट्स की ग्रोथ कम हो गई, कुछ स्टेट्स तो लगातार कम हो, बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, ग्रोथ कम होती जा रही है। इम्पोर्ट बिल से जो सरकार के पास पैसा आता है वो भी कम हो गया, हालांकि वो समझ में नहीं आया क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ गए। तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। ऑथर ने डेटा दिया है जो डेटा खराब है, इस तरह के Analytical and उनको cautionary. पेसिमिस्टिक भी कुछ Why might November's goods import bill of 70 billion be considered puzzling in the context of the data provided? It contradicts the declining factory activities levels in November, significant increase in domestic consumption. It do not align the contraction in GST revenues, fails to spot the corresponding. नवंबर की पब्लिक टू स्पर अ कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन डोमेस्टिक रेवेन्यूज नो डी वाले बच्चों को महापाती अवार्ड दिया जाता है। जीएसटी कहाँ से आगे इम्पोर्ट्स थे, तो आज कर सकते हो। What could be inferred as a possible explanation for slower GST revenue growth in December? What could be inferred as a possible explanation? A decline in input cost inflation, reduced economic activity in northern states over dependence on imports, inadequate tax reforms. तो जीएसटी बढ़ना चाहिए, तो महंगाई कम हो गई तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई अगर इसमें तो सरकार ने इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, Why might policymakers be optimistic about rural demand despite the overall economic slowdown? Rural goods growth has outpaced economic growth, completely mitigated the effects of inflation. Resilient rural demand is expected to complement a festive boost in cities. Fuel expected higher GST revenue compared to क्या पे हो सकता है, तो ये दोनों चीजें दूसरे को पूरा रूरल डिमांड स्ट्रांग होगी तो ये फेस्टिव सिटीज में जो डिमांड है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी। रूरल एरियाज में ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, ले लो चलिए। water was on the state of India's groundwater. तो स्किमिंग करेंगे, ऑलमोस्ट 4700 स्टूडेंट्स आर वाचिंग और रिक्वेस्ट करूंगी सभी को लाइक कर देंगे सेशन को। वाटर वो स्किमिंग करिए, स्किमिंग का मतलब होता है An annual assessment.
लाइक जो और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, What factor increases the likelihood of excessive rainfall compared to regions with minimal agriculture? Over exploitation of groundwater flows, high annual rainfall, B. आप ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ये वाले बच्चों को महापाप ये बोल दिया जाता है, बच्चे थोड़े ज्यादा तो यहाँ रीजनिंग में अगला Which of the following measures does the passage suggest to address the groundwater contaminant? Restriction groundwater from agriculture concern increasing frequency of क्लास की यूनाइटेड अवेयरनेस conducting awareness program. What? Which of the following measures does passes suggest to address the groundwater contamination? होना वो बनाना A bone to pick to become extremely unable to have evidence to need to discuss to do something to solve. Jump the gun. See. Go against the grain means are different from what is on. Go. Pressure to become extreme. To have a grievance or to disgust. To do something to see. Going to become extremely angry. A. To have a grievance that need to be done. Afflicting. Foster strengthened replenishment. Perennial everlasting. Transient. Assisted support in the सबको जो जो बच्चे मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उसके उस बच्चे का नाम कमेंट सेक्शन में गिफ्ट होगा और उसके घर ये बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए सभी लोग कम से कम 3 मिनट का मीनिंग कमेंट में लिखें। जो बच्चे प्रोफेशनल बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आपके पास आज सैटरडे और कल संडे का टाइम है, जो क्लासेस आपको मिस हुई हैं उनको देख लेना और मंडे से लाइव क्लासेस आना स्टार्ट कर देना। जिन बच्चों ने प्रोफेशनल बैच में एडमिट कर लिया था, सैटरडे और संडे को ग्रामर गर्ल्स की क्लासेस करेंगे, सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। बट परफेक्शन और एडिटोरियल की आदत हर किसी की है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर सिलेक्शन चाहिए, इंग्लिश सबसे ज़्यादा कह सकते हैं फ्लुएंट सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये दोनों की आदत बना लो। अभी भी 40% डिस्काउंट चल रहा है, 5 तारीख तक फाइनल है ये। कोड लगाओगे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा और प्रोफेशनल क्लासेस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन। कोड आपका तब पता लगेगा लास्ट डेट है 5 जनवरी, इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुका है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। बैक टू बैक चीज़ें आई थी, क्रिसमस आया, न्यू ईयर आया, अब ये इसकी आखिरी ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी पीडीएफ सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, सारा कंटेंट मिल जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल कर as well as being Australia's largest defense tax to India. as well as being Australia's largest defense tax to India.
The recent exercise was the most complex ever carried out carried out between our defense forces. Deployment to India. Train will not make sense, PAT will not make sense. Defense protection to India can also make sense. Okay, as well as being Australia's largest defense cash to Being India. Australia's defense Yeah. deployment to India. The recent exercise was the most complex ever carried out between our defense forces. So everybody is saying between is used for India's and which India and Australia's defense forces, no? As well as being Australia's largest defense deployment to India. Defense deployment will only make sense, right? So the recent exercise was the most complex ever carried out between our defense forces. Yes, absolutely correct. Okay, so not Baldwin because Baldwin is really used for the area, not for the forces. So the next. In fact, some dash think that rather than beating yourself up, striving to balance work, striving is trying hard to balance work and life. It might be better to simply the imbalance. In fact, some doctors think that doctor researchers Think that. Just we need plural now. So either A will go or B will go. Okay, plural now. So in fact, some that think that some researchers, some scientists think that rather than beating yourself up, striving to balance work and life, it might be better to simply. Now here, this is also the hint that we need V1 form 2 plus V1. Okay, simply के बाद present tense नहीं V1 form because it is infinitive. So simply this option is eliminated. The answer is going to be one, that to embrace the imbalance. Okay. Yes. yes, 2 plus 3. Think is a plural verb. Yes. 2 plus. With a shiny silver cover, large square format and brightly colored dash. With a shiny silver cover, large square format and brightly colored pages, this book is sure to catch and dash any child's catch and illustrations. B. V1 simple the hint is there. Infinitive. Compost. अभी इसको नहीं देखो अगर यहाँ पे होल्ड होता सपोज यहाँ पे होल्ड होता तो विल यू चूज कवर हियर why because it will be repetition already it has been described नहीं use करते not plural noun who told that we need plural noun is there any hint that you need plural where is the hint that you need plural tell me guys we will not because we need plural because it is already mentioned cover has already been described with a shiny silver cover large square format and brightly colored cover again if you talk about cover so it will be what repetition so we can simply eliminate on the basis of this that already a cover is given so that is why it's eliminated okay so अगर वहां पर बोल्ड होता तो भी हम उसको eliminate कर देते remember this thing okay so compose is a verb it is eliminated so pages and illustrations both can make sense brightly colored pages, brightly colored illustrations. Illustrations means the examples, pictures, and all these things. Okay. This book is sure to catch it. Now, catch and release child's attention or hold attention. Hold attention means attract attention, isn't it? Attention release कर देगा मतलब attention लगा ही नहीं होगा ध्यान जाएगी. So that is why you have to see the blank also. So two cats and this hold. I am saying if had this also been hold, then it would have been wrong. Okay. So next. This hold. So that is why you have to see the so being hold then it would have. The lesson is that of
The lesson is that of apathetic we judge people by their dash behavior without trying to understand that they might be going through something worse than we are. People by their immediate behavior isn't bad visible behavior. The lesson is that of compassion. Seeing any need compassion visible immediate behavior ANC Lectures of learn past behavior. We can use visible behavior also. We can use past behavior also. We can use this immediate behavior also. The lesson is that of dash empathy, love, compassion. All will make sense. We judge people by their dash behavior without trying to understand that they might be going through what they might be going through. Understand what they might be going through. Something worse than we are. First of all, past will not go because we judge people by their past behavior. पास्ट बिहेवियर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पास्ट में क्या फेस किया है वो हमें नहीं पता होता है ठीक है हाँ लेट्स सी पास्ट विल नॉट कम बिकॉज़ we don't know what they have been going through in the past we don't know but still we try to judge them okay so this is eliminated अच्छा अब आ जाता है आपका compassion and visible behavior so immediate behavior means right now how to behave now we try to judge them by their immediate behavior yes current behavior it is carrying the sense so that is why it is what empathy the lesson and see one more thing empathy is also more suited here rather than love and compassion empathy you know that the ability to feel others the ability to understand and feel for others that is called empathy isn't it the ability ability to understand So if you see in between love and compassion, it is basically because we don't understand what they have gone through. So this feeling of understanding their pain that is best that can be described with empathy. Okay, so that is why the answer will be B rather than B or C. I hope it's clear. Yes, immediate behavior is correct, but you have to see more things because we can say visible behavior also past behavior. Is this question clear to everyone? To ability to understand and feel the pain of others. When do we use the word love and compassion? feel the pain of others. When do we use the word love and compassion? M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the dash beautiful language in the world. It was the most beautiful and the clearest, the most logical that we must guard it among us. What is basically the usage of the word compassion? Compassionate. See, with having more something. And become ऐसे किसी की misfortune such situation see Despite its soothing texture, warmth and character, brick structures, some with their own set of dash with the set of the chief of them being the potential for water
seepage through the motor joints. What, despite its soothing texture, warmth and character, brick structures come with their own set of anxieties, not problem, not concern, desires, benefits. Series to enthusiasm. Compassion, simply pity, sympathy, mercy. In all these cases, we basically use compassion. Okay, so that is also one of the hints. Look, what is despite? Don't you think that despite is given? So don't you think that you need contrasting statements? Everybody is saying a smriti, despite its soothing texture, positive, warmth and character, positive. So these are positive things. So here you will talk about positive or negative. First of all, tell me. Despite means there will be contrast, isn't it? So despite, अच्छा, दूसरी चीज, another point, the chief of them. The chief means the main, the most important of them, being the potential for water seepage through the mortar joints. Okay, brick joints. Now tell me, mortar is basically one chemical that we use to make bricks. Okay, so now tell me, सीमेंट वगैरह जो होता है ना, उसको हम कहते हैं mortar. Okay, so now tell me, अगर आपका water seepage करता है, आपके wall से, brick से water ooze out हो रहा, seepage हो रहा, तो ये benefit है. चलो आपने डिस्पाइट मिस कर दिया, बट ये वाला पार्ट तो पढ़ा होगा ना कि कुछ भी नहीं पढ़ा. तो इसलिए यू नीड अ नेगेटिव वर्ड, बिकॉज सीपेज, वाटर सीपेज प्रॉब्लम इज नॉट अ बेनिफिट, इट इज व्हाट. अच्छा, एंजाइटी तो नहीं हो जाएगी? मतलब ब्रिक स्ट्रक्चर्स कम विद देयर ओन एंजाइटीज, एंड एंजाइटीज आपको पता है दुख. तो ईंटों को क्या दुख होता होगा? We get anxiety. I get anxiety when I see this also. Okay, so anxieties doesn't refer to anxiety is what basically we use for humans, right? So the major concern is sleeping. Problem between को anxieties is वो कोई पोजीशन नहीं, फिर डबल ऑफ कर दिया, फिर डबल ऑफ कर दी, फिर हो गई. Yes, so meaning will change. I know it was typo. I do know it was typo, but it is my duty to tell you that what difference it will create. The venture failed in the first year owing to fact that most of the farmers were grain growers and had dash knowledge of growing vegetables. Ample to switch organic means from chemical. Ample. Now here you can't eliminate on the basis of grammar. You have to see the context. The venture failed. The venture failed in the first year owing to the fact that, because of the fact that most of the farmers were grain growers and had dash knowledge of growing vegetables, and the switch to organic means अगर कोई चीज fail कर रहा है, इसका मतलब people they have ample knowledge, abundant knowledge, so or they have limited knowledge. Limited means less knowledge. That is why they didn't have any knowledge of growing vegetables, and sorry, they don't have the knowledge for organic means. The venture failed in the first year owing to the fact that most of the farmers were grain growers. They were not venture growers and had dash knowledge of growing vegetables, and grain growers don't have the most knowledge of vegetable, so the switch to organic mean from chemical. Okay, so they didn't have knowledge of growing vegetables, and the switch to organic means from chemical. So organic means from chemical. So only negative is required. The use and application of technology to assist judges in routine functions along with the government's initiatives like the use and application of technology to assist judges in routine functions along with the government's initiatives like dash alternative dispute resolution can help clear the backlog of opening cases in courts. Facilitating alternative dispute will be the obstructive assistance. See, now here nothing is going to help you. Grammar will also not help you. Now here you have to see the context. Now maximum are going for A, some are 6C also. Yes, we need a non-finite verb.
the use and application of technology to assist judges in routine functions along with government initiatives like dash alternative dispute resolution can help clear the backlog. So if something can help you clear the backlog, do you need positive or you need negative? Yes, Prasoon, you will get your PDF on my Telegram channel. So those who are new here, please join this Telegram channel. Learn English with someone. अगर आपके लिए मैं कोई सेशन लगाऊं जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, so is it a positive or it's a negative thing? Of course you need positive. So impeding is eliminated. And we need ing form. So these two are also eliminated. Encouraged is also eliminated. Had it been encouraging, it would have been correct. So facilitating also means encouraging, helping. So others, did you get the PDF of paid editorial? Distributors in parts of India having dash have been against FMCG companies over claims that disparity in offers and pricing being offered by them to modern trade and e-commerce resellers are harming their business. Immediately, I load the video. Oh my god. Okay. Don't mark the answer without your locating for to support. So support against is wrong. Support for, okay? So when there is disparity, difference in offers and prices bring offer to them to modern trade and e-commerce retailers are harming their business. Okay? So we need a negative word. So that is why agitating. Agitating means protesting. So supporting and backing they both are synonym. It will not go. So you manage that. So ये क्या आ गया? अच्छा चलो we are done with this session guys. ठीक है? 25 questions हमारे ऐसे हो गए because fillers generally it is easy. Okay, so we are done with this session. Now we'll meet on Monday. अच्छा Monday से I'm going to bring complete mock because this week तो नहीं चला. But from Monday we will be targeting SBI PO and clerk both. Okay, SBI clerk and PO. So I will be bringing that level of questions only. So please everybody be regular from Monday. Okay. इस week अब आपका New Year वगैरह सारी चीजें over हो चुकी हैं. So be regular from Monday. Okay. So we will be doing the entire mock paranormal close test everything. This was easy. Anybody who got 25 out of 25? Did we do only 22 questions or 25 questions? Any doubt regarding? It's good. Thank you. Yes, today we have 10:15 AM live session. Paid session we have. 4 wrong. You can ask. Anybody who got? What's 22? 90. So 2015 Keep studying. Anybody who can say you got? एक वाला तो सबका गलत हो गया था. One question was wrong for everybody. Basically nobody can say that he got 25 out of that is whatever number of questions we did. Okay. Chalo. This is my Telegram channel. You all can join. If you want to join Audible platform, use code SAVA. Okay. So use code SAVA 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 to join Audible platform. Multiple batches are there. Next week we will be starting our PD classes in interview batch as well. Okay. 7 p.m. class we don't have. Now we have the low class that is at 10:15 a.m. Okay. Thank you everyone. Take care. Bye bye.